Welcome back. A calm hand in Gujarat's stormy politics. A man who once helmed the state of Gujarat with quiet confidence, Vijay Rupani, today is no more. The former Chief Minister of Gujarat was amongst the 241 people killed in this horrific Air India crash in Ahmedabad. His death marks not just a personal tragedy for his family. He was all set to visit his daughter in London. His family was waiting there for him. It's also in some ways an end of an era for Gujarat's BJP politics, specifically with regard to Vijay Rupani. He was the Chief Minister of the state from 2016 to 2021. Today we look at his journey from Rajkot, from being the mayor of Rajkot to being an organizational man, to helming the CM's post in Gandhinagar, and now somebody who has passed away. The number 1206 particularly was not just a number for Vijay Rupani. It was also a constant across his decades of public and private life. It often featured on the number plates of his vehicles, be it a scooter in his early days or the official car of a chief minister. For the long-serving BJP leader, 1206, it stood for good fortune, but unfortunately, it didn't. On the 12th of June 2025, that number, in a cruel twist of fate, became also the day for his death. Now, Mr. Rupani, 68 years old, was amongst the 242 people on board Air India flight AI 171, which crashed moments after takeoff from Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. He was going to London to be with his family and particularly his daughter. The aircraft plunged into a medical college complex in Gandhinagar in Ahmedabad. It sparked a massive blaze and led to the deaths of several people. Like I said, he was traveling to London to meet his daughter and also visit his wife, who's there. He never made it. The flight manifested, in fact, the flight manifesto listed him on seat 2D. There are also pictures that people took of him as one of the passengers there. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu confirmed that the former Chief Minister was amongst the dead. Before that, Union Minister C.R. Patil also had said that he had passed away. The crash occurred on the 12th day of the 6th month, 1206, the same date that Vijay Rupani would consider very lucky for him. BJP leaders, including Gujarat State Party President C.R. Patil, have noted this tragic irony. The Prime Minister was also at his residence. He met with his wife, Anjali Rupani, and he has paid his tributes as well. He has called him an organizational man, a true patriot. But remember that there is a lot more to Vijay Rupani. Rupani's journey has left a long trail. He was the Chief Minister from Saurashtra. He was formerly the mayor of Rajkot. He belonged to the Jain community, and his importance in Gujarat politics is critical because he was more than anything an organizational man, a BJP man. Born in Burma in 1956, Mr. Rupani moved to Rajkot with his family as a child. He was an early member of the RSS and later the ABVP, which is the student wing of the RSS. And he was also very active during emergency. He was imprisoned during emergency. And those who know him also say that he was not a headline chaser. He preferred backroom strategy. He was a common man. He was a common man's CM, and he was a three-time MLA from Rajkot who took over as the Chief Minister of Gujarat in 2016. And this was after Anandiben Patel's resignation. He remained in office till 2021. And this was a turbulent time because Gujarat had witnessed the Patidar protests and also protests over Una flogging. But Mr. Rupani took over as the Chief Minister then. And he also, in some ways, was described as BJP's calm force in crisis. BJP also saw one of its turbulent elections under him in 2017. Vijay Rupani maintained quiet discipline even during turbulent times such as the Patidar agitation or COVID-19 pandemic. His critics often called him soft, but party insiders who have worked with him say that there are reasons about his personality traits that have also made him a trusted choice because he got things done without making a noise, and he was largely non-controversial. And he's the one who passed away along with 242 others. And they were all on board the plane. Prime Minister Modi has visited his family and he has paid his condolences in person, also tweeting about him. He's survived by his wife, his daughter and his son. Let me get you some reactions from political leaders who have spent time with Vijay Rupani. This is what Shankar Singh Waghela, former Chief Minister of Gujarat, said with regard to him. विजय भाई का जो हमने सुना बहुत दुख हुआ। हमारी बहन जो है विजय भाई की जो शादी हुई तब से मैं इनका साक्षी रहा, और उस समय भी जो एबीवीपी में विजय भाई यहाँ विस्तारक थे, हमारा मिलना होता था। इसके बाद भी जब मुख्यमंत्री बने तब भी हम मिले। ऐसे सालस
अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लीडर और वेरी पॉपुलर। उनका लॉस परिवार को तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो पुत्र मिला, जी मिली, वो सब मिले तो दुख होता है। Gopi Manyar joins us. Gopi, tell us what kind of a person, politician Vijay Rupani was, because he helmed a state like Gujarat, which has seen leaders like Narendra Modi and of course others like Amit Shah, Anandiben Patel. Vijay Rupani was slightly different. People say that he was a karyakarta at the core. You have seen him very closely. Tell us what are the unique traits about him. देखिए, विजय रूपानी की अगर खास बात कही जाए तो वो हर इंसान के साथ एक सामान्य इंसान की तरह ही बात करते थे। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर थे और अचानक उन्हें बोला गया कि आपको एज अ चीफ मिनिस्टर रिजाइन करना है, तो बिना वक्त गवाए उन्होंने सीधा रिजाइन कर दिया। मतलब कभी भी उनको कुर्सी के साथ, जो हर किसी को होता है कि कुर्सी से प्यार होता है, उनको कभी भी कुर्सी के साथ कोई लगाव नहीं था। इनफैक्ट मेरी तो उनसे जब 30 तारीख के आसपास ही मुलाकात हुई थी और उस वक्त उन्होंने, जब हमारी बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि अब नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा तो मैं अपनी बेटी के घर होकर वापिस आ रहा हूँ। तो उनके साथ काफी ज्यादा उनका हर किसी के साथ बहुत ही अपनापन था। यहाँ तक कि राजकोट के अंदर आज जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। अलग अलग जो एसोसिएशन है उन्होंने भी आज बंद रखा है विजय भाई को श्रद्धांजलि देते हुए। ये कहा जा रहा है कि विजय भाई की जो डीएनए टेस्ट हो जाएगा और डीएनए टेस्ट होने के बाद उनकी जब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी तो वो भी राजकोट के अंदर ही निकाली जाएगी, क्योंकि रंगून से जब वो राजकोट आए और राजकोट में जब उनका पूरा बचपन बीता है तो हर किसी का उनके साथ एक अलग ही रिश्ता है। और उसी रिश्ते के साथ विजय रूपानी का जो अपनापन होता है वो हर किसी को यहाँ पे दिखता है। वो चाहे छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े नेता हो, हर कोई विजय रूपानी को अपना मानता था। और शायद उनका ये जो हम कह सकते कि जिस तरीके से वो काम करते थे, उनका जो स्टाइल था, उनका जो अंदाज था, वो बेहद ही खास इसलिए भी था कि छोटा सा छोटा कार्यकर कभी भी उनके घर पर जा सकता था। यहाँ तक कि उनकी वाइफ जो है वो भी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनका भी उनके साथ एक अलग ही रिश्ता था। अलग ही तरीके से वो पति पत्नी दोनों ही बीजेपी में हर कार्यकर्ता के साथ बेहद प्यार से उनका जो बर्ताव रहता था वो होने की वजह से विजय रूपानी को एक अलग लेवल पे देखा जाता है। जब गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री थे तो कई ऐसे डिसीजन लिए। इनफैक्ट अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट की शुरुआत 2016 से 2021 के बीच में जब वो यहाँ पे थे तो उन्हीं के जरिए की गई थी, क्योंकि हर बार ये रिक्वेस्ट आती थी कि यहाँ से अहमदाबाद से कोई इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो विजय रूपानी के जरिए ही इस फ्लाइट की शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता दूं कि विजय रूपानी का जो सफर है वो भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि विजय रूपानी ने इससे पहले 3 बार अपनी फ्लाइट की जो टिकट थी उसे कैंसिल करवाया था। और ये तीसरी बार का सफर था जब विजय रूपानी, मतलब पहली बार उन्होंने टिकट बुक करवाई थी 19 मई की, वो कैंसिल करवाई। उसके बाद उन्होंने टिकट करवाई थी 5 जून की, वो भी कैंसिल करवाई। और अब 12 जून को वो यहाँ से जा रहे थे और उनका जो ये सफर था, उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि रूपानी को आखिरी फोन करके कहा था कि अंजू मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ, कल मिलते हैं। तो ये वो शब्द थे। और अंजलि रूपानी जब यहाँ पे वापिस आई तो उनका पहला शब्द था कि मुझे एक बार विजय का मुंह दिखा दीजिए। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में पति पत्नी का प्यार भी था, जो लोगों को, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, हर कार्यकर्ता उनको जानते थे, उनके परिवार को जानते थे। राजकोट के अंदर ये कहा जाता है इतने ग्राउंड लेवल के नेता थे कि हर गली हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई उनका पहचान वाला मिलता था। Absolutely. Thank you, Gopi, हमसे जुड़ने के लिए. Excellent details there of how Vijay Rupani was also a family man who also gave a lot of importance to his family, a unique chief minister, and also let me get you more voices of people who have worked with Vijay Rupani. Let me get in Yamal Vyas now. Yamal Vyas is the chairperson of Gujarat State Finance Commission. Thank you, Mr. Vyas, for speaking to NDTV. Sir, what is your best memory of Vijay Rupani? How would you describe him today? I worked with him for a very long time, right from 1998 when he was first appointed as chairman of the Program Implementation Committee in the Keshubai Patel government. And till the time, I think I last met him
just a few days before I became chairman of the Finance Commission, that is around Diwali. And he was always the same. And all the memories that I have, because when he was the spokesperson of the party, I was the co-spokesperson. So I worked with him for many long years. And all the time, he was a very simple man, very, I would say, a very concerned about the workers at all times. When he was not very senior and even when he became the chief minister, I don't think there was any change in him. Right. Mr. Vyas, also help us understand the importance of someone like Vijay Rupani in Gujarat politics, because, you know, he came from the minority Jain community. He was from Saurashtra. Gujarat has seen chief ministers such as Keshubhai Patel in the past from Saurashtra. He represented a very important part of the state. And how do you explain the importance of Vijay Rupani in the context of Gujarat politics? Vijay Bhai was one of the very few surviving workers of the BJP till recently who had gone to jail during the emergency. At a very young age of 19 years, he was imprisoned for 11 months. And right from then, he has been working for the BJP. So he was a hardcore organization man. He came up from the ranks. He started at the bottom and he became the mayor of Rajkot, as you said. And then he shifted to Gandhinagar in state politics. And he has always worked in the party organization for 3 terms. I think he was the general secretary of the state party. You know how important that post is for the BJP. And all during that time, he made a major role in expanding the reach of the party, especially in the Saurashtra Kutch region. And after he became CM, he had a 5-year tenure during which Gujarat made tremendous progress in all areas, and people will always remember him for his good, successful term as the CM. Right. Also, Mr. Vyas, I remember meeting Mr. Rupani when he became the chief minister. It was a very turbulent time because the Patidar protests had, were going on, and this was in 2016. And then the agitation, did not subside. And of course, in 2017, BJP also witnessed one of the toughest elections, and there was also the Unnao floggings, and generally a difficult time for the state. But how did you see Mr. Rupani going through all of this? And then, of course, COVID came. How did he manage all of these turbulences? He used to, as I said, even when he was the CM, he was more an organization man. He always cared for the party's growth, party's success. And as you rightly said, 2017 was a difficult election for the BJP. We got a good majority. And then after that election, in the next 3-4 years, he did a tremendous amount of work. And after his re-election in 2017, his performance, especially during the difficult time of COVID, when the whole country and the whole world was passing through a very, very difficult period, he handled Gujarat's COVID epidemic in such a nice manner that I would say he worked day and night like every other leader. But being the leader of the state, he had a major responsibility which he carried out with complete success, preventing a large number of deaths and really coming through COVID with the most minimum of damage. Also, Mr. Vyas, if I were to ask you, what are the best achievements that you can think of? What are the highlights of Mr. Rupani's tenure when it comes to policy or politics? Because I remember having these conversations with him on domicile reservation then, which was coming into effect in Gujarat. And he used to talk about the project that was coming up in Sanand. He made it very clear that all of this was the vision of the Prime Minister and he was only taking things forward. What would you think would be the best highlights of his policy and his political approach? He was a very simple man and he tried to make life of the common man very simple. He made a lot of changes which really made very, very simple the day-to-day life and especially the people dealing with the government. Throughout his tenure, he was continuously working on simplifying life for the people and also in developing the state. For example, AIMS was
brought into Gujarat during his tenure, and yet he was instrumental in getting a lot of projects in Gujarat during his tenure, which I'm sure will stand the test of time. Mr. Vyas, my last question to you, sir. What would you describe as the best personality traits of Mr. Rupani, something that really made him who he was? He was most friendly with the smallest of workers, and I have always experienced his hospitality, his simple frankness, and he was always very frank with the workers, which is very rare in politics. But with every worker, he was very frank, and he had a very clear idea of what he wanted, he wanted for the party, and he did that at all times. Right. Thank you, Mr. Vyas, for joining us on NDTV. This is Yamal Vyas speaking on Vijay Rupani, and he is also the chairperson of the Gujarat State Finance Commission. Also, Raju Dhruv joins us. He's a senior BJP leader in the state of Gujarat. Thank you, Mr. Dhruv, for speaking to NDTV. So, what are your memories, heartfelt memories of Mr. Vijay Rupani? How do you remember him today? मैडम मैं हिंदी में बात करूंगा। जी जी बोलिए। विजय रूपानी एक तो क्या था कि वो विद्यार्थी काल युवा मैं मानता हूँ कि 1975 में वो यहाँ के धर्मेंद्र सिंह जी साइंस कॉलेज है, वहाँ जनरल सेक्रेटरी चुने गए। जैसे जेएनयू में अभी एबीवीपी और लेफ्टिस्ट पार्टियों के चलता है, वैसा यहाँ कांग्रेस और तब एबीवीपी के बीच संघर्ष चलता था। वो संघर्ष करके वहां जनरल सेक्रेटरी के तौर पर चुने गए। फिर वहां से उनको कटोकटी यानी आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल डाला तो सबसे छोटी आयु, सबसे कम आयु के युवा के तौर पर उनको जेल में 11 महीने तक डाला गया। फिर बाद में वो रिहा हुए, जब आपातकाल दूर हुआ रिहा हुए, तब से वो सक्रिय राजनीति में आए। फिर वह उन्होंने राजकोट महानगर भारतीय जनता पक्ष के संगठन में कार्य किया। वहां वो स्टेट ये जो सिटी का संगठन यूनिट था उसमें उन्होंने अच्छी तरह से यशस्वी तौर पर काम किया। फिर बाद में 87 में वो नगर में पार्षद बने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो चुने गए। तब से उनकी एक यात्रा नगर सेवक की, लोक सेवक की हुई। साथ में वो संगठन में भी माहिर थे, संगठन में भी उनकी एक इतनी पकड़ थी। और सबसे बड़ी बात, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। एबीवीपी में उन्होंने प्रचारक के तौर पर अहमदाबाद में 3 साल तक घर छोड़ के काम किया। तो एक क्या था, संघ का स्वयंसेवक थे, तृतीय व शिक्षित स्वयंसेवक थे, एबीवीपी में प्रचारक रहे। ये सब उनका जो अनुभव था। और दूसरी बात, यहाँ की जो लोकल कॉलेज है उनमें उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जो काम किया, लोगों के साथ जुड़ने का, विद्यार्थियों के साथ उनका एक अपनापन था। तो वो सब पार्टी को एक काम में आया। पार्टी में वो इतने मेहनती आदमी थे। 6-7 साल तक वो स्टैंडिंग कमेटी के राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन है। और मैं मैडम आपको बताऊं, गुजरात में ये पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी जो बीजेपी अपने बलबूते पर ले आई थी। फिर नरेंद्र मोदी जी के कारण अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा सब जगह आया। तब से ये विजय भाई रूपानी की एक जो यात्रा थी, सेवा यात्रा चली। वो इतने मेहनती आदमी थे। मैं 27 साल से 97 में प्रवक्ता बना सौराष्ट्र रीजन के लिए, तब से मैं उनके साथ हूँ। वो कभी बैठते नहीं थे। दूसरा, वो सतत सक्रिय रहते थे। तीसरा बात बताइए कि वो किस तरह लोगों से, क्या वो मिलनसार थे, किस तरह लोगों से बात करते थे? जहां तक मैं जानती थी कि बहुत ही ज्यादा कॉमन आदमी थे, सरल आदमी थे। कार्यकर्ताओं के साथ वो कैसे थे? उनकी सबसे अच्छी बात कौन सी थी? मैडम एक तो उनकी सरलता, एक किसी का भी फोन उठा लेना। दूसरी बात, वो उनकी ओपीडी, यानी सुबह जब वो जाग जाते थे तब से उनके साथ कार्यकर्ताओं लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। 7-8 बजे से उनके वहां लोगों का मिलना। कभी कभी वो 11-12 बजे स्नान करने के लिए जा पाते थे। ऐसा उनका लोगों का मिलना जुलना था। वो कभी किसी को ना नहीं बोलते थे। दूसरी बात, मैं मानता हूँ राजनीति में रहना, एक वरिष्ठ राजपुरुष के तौर पर अजात शत्रु होना, किसी के लिए मन में द्वेष भाव ना हो, किसी के लिए बैर भाव ना हो, कोई विरोधी दल का आदमी हो उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धात्मक कोई भाव ना हो। अगर वो काम ले आता है, अगर जनता के हित में है, सही काम है, तो उनका काम भी करना, ये विजय भाई की खासियत रही। विजय भाई में सबसे बड़ा गुण था, एक वो इजीली अवेलेबल रहते थे और कभी किसी को ना नहीं बोलते थे। दूसरी बात, उनका कंसेप्ट क्लियर था, देशभक्ति, राष्ट्र भावना और समाज सेवा।
और सबसे बड़ी बात, वो हर हमें पार्टी लाइन में ही रहे, एक स्वयं शिस्त में रहने वाले कार्यकर्ता। ये बताइए कि जब वो सीएम बने थे तो बहुत अच्छा लगा होगा राजकोट के लोगों को, सौराष्ट्र के लोगों को, कि सौराष्ट्र से कोई चीफ मिनिस्टर बना था, तो वो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग फेस थे सौराष्ट्र से। और फिर जब उनको सीएम पद से जो है वो फिर से कार्यकर्ता बन गए, उनको फिर बाकी सारी जिम्मेदारियां मिली थी, कुछ ऐसे उनके व्यक्तित्व में कोई बर्ताव, कोई चेंज आया? आपको ऐसा लगा कि किसी कब उनको बुरा लग रहा है किसी चीज का, कभी आपको ऐसा लगा? मैडम मैं आपको बताऊं कि वो जब चीफ मिनिस्टर बने, एक नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब गुजरात में एक अकाल पड़ता रहता था, यहाँ सूखा ही रहता था। सौराष्ट्र जो रीजन है हमारा, वहाँ 10 साल में थे 7 साल अकाल रहता था, दुष्काल रहता था, 2-3 साल में बारिश आती थी। वैसे यहाँ के सभी डैम तालाब खाली रहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा आधारित सौनी योजना मुख्यमंत्री जब थे वे शुरू की थी। विजय रूपानी जी ने जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 17 दिवस में ही नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ोतरी भी बढ़ा दी और गेट मुकने भी परमिशन दे दी। इससे क्या हुआ कि सौराष्ट्र में पानी देने के लिए सहूलियत हो गई। विजय रूपानी जी ने वो जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सौनी योजना शुरू की थी, वो बाकी का काम विजय रूपानी जी ने आगे बढ़ाया। यहाँ आजी डैम के जो राजकोट की लाइफलाइन बोल सकते हैं, राजकोट की लाइफलाइन, वो डैम खाली ही रहता था, वो इतना छोटा डैम था लेकिन राजकोट की लाइफलाइन था। तो वो डैम विजय रूपानी ने तत्काल वो मुख्यमंत्री के तौर पर ऑर्डर देके पानी की पाइपलाइन डाली। मैं देखता था रात को 1 बजे वो अधिकारी को बुलाते थे, गाड़ी के बोनेट पर वो प्लान देखते थे कि भाई कैसे कैसे पाइपलाइन ले जानी है। तो उनके लिए क्या था कि लोगों का काम हो तो रात को 2 बजे भी उनके पास जा सकते थे। मैडम मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ प्रवक्ता हूँ, तो यहाँ कोरोना महामारी में राजकोट को जो मीडिया कर्मी थे 100 से 150 में, वो लोग हर दिन दौड़े रहते थे और कहीं 50 डेड बॉडी पड़ी हो, कहीं 60-70 डेड बॉडी हो, वो कवर करते रहते थे। तो उस समय जब कोरोना का इन्वेंशन किया गया मोदी जी के द्वारा, कोरोना रसी की शोध की गई, तो विजय रूपानी जी को हमने विनती की कि विजय भाई, हम यहाँ प्रवक्ता है, आप भी महामंत्री रहे, अब आप मुख्यमंत्री है, अब जब कोरोना रसी की शोध की गई है तो कोरोना रसी जब गुजरात में आए तो हमारी विनती है कि राजकोट के मीडिया कर्मियों को, राजकोट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो कर्मी है, जो पत्रकार है, कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, आप अगर कृपया करके उनको दिला दे तो यहाँ कोई आहत ना हो, कोई किसी की जान हानि ना हो। मैडम आपको मैं बात बताऊं, विजय रूपानी जी के कारण हमने 2 दफा यहाँ वैक्सीनेशन कैंप किया और 2 दफा समग्र भारत में पहली दफा पत्रकारों को हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज एज वेल। थैंक यू राजू जी हमसे बात करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी also visited Vijay Rupani's family in Ahmedabad and he offered his condolences in person. He met Anjali Rupani, the wife of Vijay Rupani, and Vijay Rupani is survived by his son, his wife and also his daughter. The Prime Minister has called his former colleague a friend and a quiet patriot, and those close to Rupani have also said that he has been active behind the scenes and advising the party during Lok Sabha elections. He was also the in charge for the BJP when it came to Punjab elections. He was also one of the observers for the Maharashtra elections, which the NDA won with a huge majority. In his death, he reminds us that leadership often is not just loud, it can also be sincere, silent and service driven. With that, it's a wrap on the show. More news and updates on the other side. Missiles fly, tensions escalate. Fearsome eruption between Iran and Israel. Middle East on the boil again. Operation Rising Lion. 2 nations strike, global tremors. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. Without US help and military and intelligence help, Israel couldn't carry out this kind of massive operation against Iran. Israel-Iran at war.